Up till now, while discussing contents of chapter 6 superposition of waves, we discussed phenomenon of interference of sound waves. During interference, two sound waves of equal frequencies overlap or mix with each other, and hence, even as the time passes, the intensity produced at given particular point of the medium remains unchanged. Intensity is maximum at few points, intensity is minimum at few points, but once at a given point intensity formation of resultant wave is done, it does not change. So in interference, intensity of sound is a function of space. Space means what? Point to point intensity varies, but at one particular point, once intensity is formed, does not change with respect to time. For example, if you hear a combination of two same keys from two different pianos, and once you hear a loud sound, then you continuous hear the same sound of same constant intensity even time passes. So during interference we get intensity with respect to space. From point to point it changes, but with respect to time at all points it remains unchanged. So intensity of sound varies with respect to space. Underline these words. During the phenomenon of interference at one particular point, once it is created, it remains unchanged even with respect to time. तो वो स्पेस का फिनोमिनॉन है. उसमें क्या करते हैं हम लोग? वी कंसिडर टू साउंड नोट्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसीज. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू ट्यूनिंग फोर्क्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसीज, I will hammer them and sound them together. At the same instant, I will hammer and keep it on the sounding box. तो simultaneously sounding किया है उसका. तो what happens? We get two waves of same frequencies, but if one of the forks prong, हर एक फोर्क को दोन prong होते हैं, out of two, any one prong of any one fork forming the pair, if is filed or if loaded with wax, कौन से भी एक फोर्क का एक prong हम लोगों को फाइल करना है, पॉलिश करना है. Otherwise you can load it with wax. Then it is observed frequency gets affected. So दो frequencies n है. अभी अगर हम लोगों ने फाइल किया तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है. अगर यू लोड वन ऑफ द prongs ऑफ एनी वन fork in the pair with wax, its frequency reduces. It is practically proved. तो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, दो फ्रीक्वेंसीज है ना जो सेम थे, हम लोग थोड़े से अल्टर करेंगे, and then by keeping all rest conditions same, means two forks should be kept very close to each other. They should sound waves produced by such two forks having slight different frequencies should move in one direction, should move with same velocity, should move along same line. We will keep their amplitude same. दोनों के amplitudes हम लोग same रखते हैं. ऐसे हम लोगों ने assume किया. तो what we will consider, the superposition of two sound waves of equal magnitude, amplitudes and having slight different frequency difference. अभी हम लोग क्या करते हैं, अगर ऐसे वेव्स सुपर इम्पोज हुए तो इफेक्ट क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी और इंटरफेरेंस के अलावा और कुछ इफेक्ट मिलता है क्या, वो सोचना है. सो टुडे विल proceed further to study the superposition, overlap, mixing of two sound notes having equal amplitudes but slight different frequency difference.
एक की फ्रीक्वेंसी N1 है तो दूसरे की फ्रीक्वेंसी हम लोग N2 बनाएंगे। वो कैसे कर सकते हैं मैंने बोला है, दो फोर्स इवन ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसीज, एनी वन फोर का एक प्रॉन्ग इधर फाइल करो, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। इफ यू लोड इट विथ अ लिटिल वैक्स, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस कर सकते हैं। So if that is done, you will get superposition in the same region of the medium of the waves having slight different frequencies। वो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 7 हर्ट्ज टू 10 हर्ट्ज के ऊपर नहीं रखना है। द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी शुड बी लेस देन 7 to 10 hertz। तो व्हाट हैपन्स व्हेन सच वेव्स सुपरिम्पोज इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट अ गिवन पॉइंट। सपोज दैट दो साउंड वेव्स है, वो एट सर्टन इंस्टेंट टी at some point arrive किए। if both are sounded together they will arrive at that point in phase। in phase तो है ही, तो क्या हो जाता है when they are in phase, even with respect to time, as time passes intensity at that point increases and decreases with respect to time। Intensity at a given point changes, it becomes the function of time। For example, एक एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस एक जगह खड़ी है, आई एम द ऑडियन, मैं भी एक ऑडियन पर्सन हूं, मैं एक जगह खड़ी हूं। एम्बुलेंस और मेरे बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, बोथ आर स्टेशनरी एट द टू पोजिशंस। अभी क्या होएगा, एम्बुलेंस में एक एलसी ऑसिलेटर रहता है विच इज द ओरिजिन ऑफ सोर्सेस ऑफ साउंड वेव्स। दैट एलसी ऑसिलेटर क्रिएट्स टू साउंड नोट्स at the same time, at the same instant, having slight different frequencies। अभी स्टेडी है, वो एम्बुलेंस रन नहीं हो रही है, नॉट इन मोशन, ऐसे अपन एज्यूम करते हैं। तो मेरे और एम्बुलेंस के बीच जो डिस्टेंस है, मेरे और एम्बुलेंस के बीच भी रिलेटिव मोशन नहीं है, हम दोनों एक ही जगह स्टेशनरी है। खाली एम्बुलेंस का सायरन मैंने ऑन किया तो क्या हो जाता है, व्हेन आई हियर द साउंड ऑफ दैट सायरन at the given point I am not changing my position, not changing ambulance position। तो मैं जहां खड़ी रहती हूं उधर we get a loud sound and a faint sound, loud sound faint sound, loud sound faint sound। एक ही जगह intensity of sound, intensity is a function of amplitude। if amplitude of resultant wave is maximum you will get loud sound। if amplitude of resultant wave form is minimum at the same point you will get a faint sound। so what happens when such waves interfere, you get maximum sound and minimum sound alternately with respect to time। means intensity of sound at given particle position continuously changes। once it is formed it is not remaining constant with respect to time। one rise and one fall in the intensity of sound is called one beat। तो मैं आप लोगों से एक शेयर करना चाहती हूँ। वेट, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। ये शेयरिंग हो गया है, मैंने बोला है दिस इज एम्बुलेंस। जिधर सायरन है ना वो हम लोग एम्बुलेंस बोलते हैं, जिधर मेरा ईयर है उधर मैं खड़ी हूँ। सो व्हाट हैपन्स व्हेन टू साउंड वेव्स ब्लो साइमल्टेनियसली विथ वेरी स्मॉल फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। कई जगह कॉम्प्रेशन है, देखो मैं पेन से बताती हूँ आपको। दिस इज कॉम्प्रेशन and in between this is rarefied action। so when this siren produces wave, these waves move in forward direction। so at the moment a rarefied action has reached my ear,
when these waves move forward, then this rarefaction के अलावा ये जो compression है वो मेरे कान के ऊपर आके गिरेगा. So what happens at the same position? 1 minute. At the same position, at the same position, you will hear a loud sound and a faint sound at the same position as a function of time. So interference pattern कैसा तैयार होता है वो भी मैं शेयर कर रही हूँ. Wait. देखो ये राइट साइड पे मेरा ईयर है. सो इनिशियली लाउड साउंड एंड देन इनिशियली लाउड साउंड है, बाद में वो फेंट हो जाता है. अगेन लाउड साउंड अगेन, बिकॉज ऑल दीज वेव्स आर मूविंग पैरेलल टू ईच अदर. ये वेव तो आगे आगे जा रही है. सो इन बिटवीन यू विल हियर. So you will hear continuously a fluctuation in intensity of sound at the same position. So intensity of sound at one particular point changes with respect to time. So in phenomenon of beat, intensity is a function of time. While in interference, intensity form at one particular point remains constant, remains unchanged at that point, even though time passes. This is the difference between interference and beats. So, what are the requirements for the formation of beats? One rise and one fall is called one beat. Occurrences of loud sound are called waxings, and occurrences of minimum sound are called wannings. So, one waxing and one wanning forms one beat. Number of beats heard in 1 second is called frequency of beats. ऐसे हम लोगों को बीट्स सुनाई देते हैं. मैंने बोला ना, जब भी एम्बुलेंस पास होती है तो अप डाउन अप डाउन. हम लोग एक जगह स्थिर है, एम्बुलेंस को भी स्थिर रखो तो ये जो बीट फिनोमेनॉन है वो ज्यादा अच्छी तरह से सुनाई देगा. If there is no any relative motion, we will hear the beats form very nicely. So ये beat phenomenon है.